Century Paper and Board Mills Limited. Corporate Briefing 2023-2024. Assalamu alaikum all. We welcome you to our corporate briefing session for the Century Paper and Board Mills Limited. We have with us our management team, which comprise of our CEO, Aftab Ahmed Saab, Tanveer Saab, our Chief Operating Officer, and Mr. Rashid Dastagir, our CFO, and the team. How we'll conduct is we will go through a presentation. Thereafter, we will dedicate a separate time for the question and answers. With that, I request Mr. Rashid to take over. In this presentation, we will give in two phases. In first phase, we will give a short introduction of the company and operational developments. And then in the second phase, we will touch the financial performance areas. As most of the participants are fully aware of the fact that Century Paper and Board Mills Limited is part of Lexan Group of companies, and Lexan Group is in various businesses which include soaps and detergent, toothpaste, surface care products, internet services, paper and paperboard manufacturing, printing, publication, food, agriculture, and most recently in traveling and airline business. Our major companies of the group are Colgate-Palmolive, McDonald's Pakistan, Fly-Jana, Agency Insurers, Express, Cybernet, Tribune, Rapid, Lexan Business Solution, Merit Packaging, Princeton, and Century Paper, etc. These are some major companies. Century Paper is a public limited company and listed on Pakistan Stock Exchange since 1990. And at the moment, Century is one of the largest integrated pulp and paperboard plant of the country. We have been maintaining our position as market leader in coated packaging boards in particular. We are also we are getting the requirements of quality segment of the corrugated cartons business also in the country. Century current installed capacity is 274,000 metric tons, and the plant is situated near Lahore, and the plant is situated on around 171-acre land. Our energy capacity currently is 65 megawatt, and our direct employees are at the moment 1,605, which doesn't include the contractual employees, which are more than 1,000. These are some major milestones of production capacity. We started production in 1990 with the capacity of 30,000 tons. And in 97, we added another machine, raising our capacity to 66,000 tons. Then we again raised our capacity in 2003, and capacity reached 90,000 tons. In 2006, we added another machine, and our capacity increased to 110,000 tons. Then in 2009, we went for a mega expansion by installing PM7, and the capacity increased to 240,000 tons. Last year, after doing BMR, we increased our capacity to 274,000 tons. And currently, our capacity is 274,000 tons with 7 machines in operations. Our milestones in power are also very interesting. We started commercial production in 1990 based on the power from grid with 5 megawatt load. And in due course of time, we realized that there is interruption. And at that time, there was no concept of load shedding. When interruptions started disturbing our continuous process, we went for Cogen 1 plant with 10 megawatt, and our total capacity reached 15 megawatt. On installation of PM7, we installed Cogen 2. At that time, gas availability was not an issue, and we installed gas turbines from Kawasaki for 20 megawatt. And eventually, gas shortages started,
And in 2016, we installed cogen plant, coal-based cogen plant of 18 megawatt. And naturally, to have cleaner energy, we added 3.7 megawatt solar energy in 2020. And recently, when the power on national grid is available in surplus, we enhance the capacity of our grid station to 16,000 tons, bringing our total available energy capacity to 65 megawatt. And current capacity is this. And these are some major milestones in fulfillment of the environmental issues. And in 2002, we installed effluent treatment plant first, and then we installed secondary waste treatment plant in 2016, and now secondary waste paper plant is in installation process, and its completion is expected by 2025. As regards our product, we are in three major categories. One is coated packaging boards, the other is paper, and the third is container. But our main product category on which we are focusing and our major capacity is for coated packaging board. Coated packaging board constitutes around 80% of our total installed capacity. And all the major end users and quality printing houses are using our packaging products for their primary packaging of various products. Our end users includes Unilever, Colgate, McDonald's, KFC, Nestle, and all the major brands in Pakistan are using our coated boards, either from PM7 or PM4 for the packaging of their products. This is the management team headed by our CEO, Aftab Ahmed. Regarding market updates, last year was a very challenging year. Overall, national consumption of all types of paper and paper board drops by 8%. And unfortunately, in this year, market size reduced by 8%, and domestic capacity increased as the major players in the organized sector increased their capacity by doing a lot of BMR work. And at the same time, imports increased by 22%, and domestic production reduced by 17%. This was a very challenging year, and in this year, Century focused on best possible product mix to mitigate the negative impact of these challenging circumstances. In total paper and paperboard consumption, Century market share remained 11%, and 13% share was by the other quality manufacturers of paper and paperboard products in Pakistan, while 29% share was taken by imports, and 47% remained with the other local players, which are mostly in unorganized sector, and their quality is not comparable either with Century or imports or with the other quality segment operating in Pakistan. In case of our, as I have mentioned, that our major share in the capacity is coated packaging board. And in coated packaging board, there are two categories. One is coated duplex board, and total market size was reduced to around 270,000 tons. And we were able to maintain, rather improve our market share and our position as market leader with 43% market share. And 8% share was created by other quality segment in the local market, and imports were only 4%, while the unorganized sector contributed 45%. We maintained our market leadership position in case of coated duplex board. However, in case of coated bleach board, the total market was 150,000 tons, and with the cheaper imports from China on dump prices,
increased a lot. And previously, the share of import in the total consumption of bleach board was around 50%, which increased to 75%, reducing Century share from around 24% to 14%, and other quality segment share from 23 to 11%. This was because of the dump prices from China. As mentioned earlier, that our total capacity is 40,000 tons, 80,000 tons is import, and out of rest the capacity, 8% is for container boards and 11% is for आवाज बंद हो गई है आपकी यार। There are some certain technical issues. They got frozen. So let us check. Rashid sir, can you hear us? Because we cannot hear you. Yes, sir. Just Now Please you con- can hear us? Now we can hear you. मिस किया रिपीट कर देंगे. इसी को बता दें. you can start from here. This is regarding the capacity utilization. Our coated duplex board total capacity was 174,000 tons and capacity utilization remained 69%. Keeping in view the reduced market size, we operated only one machine, which is more efficient machine, PM7, and its capacity utilization remained 81%. In case of bleach board, where we were facing a very unhealthy competition of dumping to imports from China, capacity utilization remained 52%. In case of paper, due to low market demand, its capacity utilization remained 63%. And in case of container board, capacity utilization is 28%, but not due to this drop in the sales of box plant, but we opted to outsource some raw material due to commercial viability instead of producing it at our plant with the expensive energy. This is the energy breakup of our capacity, and fortunately we do have energy mix to use various fuels, and we kept on using the fuels which were more economical at various periods during the year. Our cogen 3, which is based on coal, our 42% of the energy needs were met by coal, while 29% by gas, and from grid 21%. And from HFO 4% and from solar around 3%. This was the energy mix during the year. Regarding the capital expenditure, I'll request Rashid Saab to. Thank you. Thank you, Tanveer Saab. So regarding capital expenditure, so we have shown the historical expenditure made from 2021 to 2023-24, because we have started the BMR based on turf financing from the year 2021. So during the current year, we have expended total expenditure of 1973 million. 1973 million, out of that 177 million incurred on the
BMR project based on turf financing, because most of the projects were completed last year and few were completed this year, and only one project is in process, that is this second country wastewater treatment plant that was discussed in previous slide as well. So far we have incurred 4.1 billion on the turf-based BMR project. Out of that, 69% was for capacity enhancement, and rest 31% for the other power and utilities and other efficiencies and upgradations. Something about the SDG and ESG updates. So these are the United Nations Sustainable Development Goals. And out of 17 goals, we are mainly focusing on the SDG 4, quality education, SDG 5, gender equality, 6, clean water and sanitation, 7, affordable and clean energy, 8, decent work and economic growth, 9, industry innovation and infrastructure, and 12, responsible consumption and production. And Century has undertaken extensive initiatives for the resource conservation in the field of energy and water. And also, we are continuously doing the work for gender equality, responsible consumption, and education, etc. As in education, we have established smart school for the children who are not in the school earlier, from the surrounding communities related to poor household. So we are encouraging them to bring their children into the education. So Century has established around 800 students are enrolled in those schools so far. These are the certifications Century has achieved so far. So in integrated management system, we have QMS, EMS, OHSMS, and then we have also FSC COC certification since 2020, and the also accredited for the lab quality since 2023. And company has also implemented the Kaizen and 5S principle at Mills. These are the different awards and recognitions we have received in the area of sustainability, environment excellence, and best corporate report from ICAP and ICMA, and also the corporate excellence award from Management Association of Pakistan. So most of the award we have received multiple times. Now, financial performance. So starting from the year at a glance. So to summarize, we sold 185,000 metric tons and achieved gross sale of slightly above 49 billion. We earned gross profit of slightly above 4 billion. We earned profit before tax of 1.17 billion, profit after tax of 524 million, and EPS of rupees 1.3 per share. Our equity stood at 13.7 billion. Our total assets stood at 29.54 billion. Total liabilities stood at 15.85 billion. Our market capitalization of company shares stood at 12 billion. Leverage ratio is 1.14, and the breakup value as on June 30th is rupees 34 per share. This is the productions and sale volumes compared with the previous year. So for the current year, 2023-24, production volume stood at 179,000, and because of the economic conditions and challenges as explained earlier, so our production remained lowest of all the previous year. We have achieved the highest volume in financial year 22, and then subsequent to that, because of the economic condition, the demand reduced, so our production volume and similarly our sale volume. Sale volume for years 105,000, and similarly these volumes are lowest of the all previous years. And we have
Thank you. They're having some technical issues. Let our team join again. Just hold on, please. Sorry. So here we have shown the sale, cost of goods sold, and gross profit on the graph in left side. So here you can see our gross profit for the year is 4 billion as compared to 4.44 billion for the corresponding year, despite the decrease in sales volume. Significantly, the decline in gross profit is not that much because, as explained earlier, we focus on targeted sale on the sustainable margin. So, the graph on right side, we have plotted the EBITDA and the return on capital employed. So our EBITDA stood at 4.14 billion for the year as compared to 4.55 billion, while the return on capital employed, which include the return for the shareholder and the bankers, stood at 11% as compared to 10%. So it is better when we combine the return for both, while when we see it, the return for shareholder, that is definitely declined. Next slide. So this is just gross profit in terms of percentage. So current year it was 10% as compared to 9% for the corresponding year. And the operating profit stood at 3 billion, that is 7% of sale as compared to 3.4 billion for the corresponding year, that was also 7% of sale. So declined in terms of value, but almost same in terms of percentage to sales. This is the snapshot of contribution of different factor to change in gross profit. So there is a positive impact because of fuel and power, because of change in energy mix, as well as the benefit of declining rates. So as we have gas from UGDC as concessional rate, as we have benefit of relief package on grid from July to October, and as we have also mentioned earlier, there is a 25% decline in coal rates. So that resulted in benefit of 1.3 billion in cost of fuel and power, and we were able to pass on some of it to the customer. There is inflationary increase in other costs, leading to 376 million decline in gross profit. Our finance cost in terms of value decreased to 1.84 billion from 2 billion. In terms of percentage, stood same, around 4%. So despite there is an increase in effective cost that we will show in the subsequent slide, but in terms of value, it decreased because of the better working capital management. And our net profit stood at 524 million, that is above 1% as compared to 905 million for the corresponding year, that was 2%. Next. Earning per share. So for the year, we reported earning per share of rupees 1.30 as compared to 2.25 per share for the corresponding year. And the return on equity declined to 4% as compared to 7% for the corresponding year. Our current ratio slightly declined to 1.62 from 1.71. There is a slight decrease in current asset and slight increase in the borrowings. Our debt equity ratio improved to 29:71 because our long-term loans are declining because of repayments, while our equity, shareholder equity, is increasing because of the profits for the year. This is the debt servicing on the left side, debt servicing and interest coverage ratio. So both ratios slightly declined as compared to previous year because of the more repayments during the period, resulting in total debt servicing of 3 billion as compared to 2.4 billion for the corresponding year. So the interest coverage ratio stood at 1.64 as compared to 1.71, while the debt servicing coverage ratio stood at 1.32 as compared to 1.88. On the right side, our long-term loans declined from 6.7 billion to 5.5 billion, while effective cost
increased effective cost of total borrowing increased to 18.37% from 16.39%. But it will now, as there is a gradual cuts in policy rate, so for this year, this effective cost will come down, inshallah. This is just a historical trend of distribution to shareholder. So from 2029 to 23, there was continuous distribution, and last year we have made a huge bonus share of 1.78 billion. This is just a snapshot of a result for the first quarter as compared to last quarter of the previous year. So all figures are improving. Net sale improved to 10 billion from 9.13 billion. Gross profit increased to 1 billion from 780 million. Operating profit increased to 760 million from 540 million. And profit before tax increased to 247 from 78 million. And inshallah, this trend will continue in the ensuing quarter as well. Next. So before question and answer session, I will request Aftab Saab to say something about the future outlook. Aftab Sahab, you are on mute. Please unmute yourself. Okay, Rashid Saab, thank you very much. I think you covered everything, but I will try to say a few things. That we have been doing a lot of BMR. All these projects are already completed, and we were hoping that we will be doing full blast, but unfortunately, the market crashed, and for this reason, our previous year was not as good as we thought it would be. As far as the future is concerned, I would share a small change in strategy. We have 7 machines, and we had dedicated each machine to each kind of product. And as the market crashed, our all machines were running at partial capacity, and some of them are efficient and some of them are not very efficient. So we decided to shift all the products on 3, 4 most efficient machines and stopping the other 3 machines. By doing so, we've managed to mitigate our losses by increasing the efficiency of our plant. There is a question which I saw just now about the gas, that there is a gas shutdown. Government has decided to stop the gas to captive power plant. Fortunately, we are not buying gas from the government. We are buying it from a third party, UGDC, and they will continue supplying us the gas. So that is not an issue for us. One thing, if you look at the long-term basis, Pakistan has a per capita consumption of about 5 kg per capita consumption of paper and board, whereas a developed country has anything between 75 to 100. USA had over 220. So the demand of paper and board has to increase. I mean, it just can't stay with the 250 million of people. The capacity, we just can't produce or consume 2 million tons of the paper and board. So long-term future is very secure because the consumption has to increase. From the short term, I believe that China had a serious issue with their trade with America, and they ended up in surplus capacity, which they are dumping to all the countries, including Pakistan. And I think they will take some corrective action to control their production, and instead of selling on dumping prices. So I believe that in a couple of months, the import will be checked. We are also working with the government to check these dumping prices. So we may get some relief from there. The other thing is, for example, we have our business in the box plant. We believe that our share will also increase there. We were a little bit
out of business because of our very high price due to high energy, and now we are back with proper energy cost, and we will be getting more business. In fact, we are getting more business already. So I think this is how the future look like. It is not excellent, but it is not as bad as last year. Thank you very So much, I Aftab sir. So, I guess with that, I may request Rashid Saab. Rashid Saab, can you see the questions in the comment boxes, or would you like to respond to them one by one? Yes, sir. देखते गए Please. Sir, the first question, can you please tell about impact of imported packaging on local industry? जी उसमें सिंपली इम्पोर्टेड पैकेजिंग बोर्ड की अगर बात कर रहे हैं तो वो फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड जो कि एलीट कैटेगरी में यूज होता था और होता है, वो क्योंकि चाइना में जैसे सीईओ साहब ने बताया कि कैपेसिटी उनके पास सरप्लस होगी बिकॉज ऑफ बैड ट्रेड ऑफ चाइना विद यूएस, और वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डंप प्राइसेस के ऊपर उसको भेज रहे थे। तो हमारी जैसी कंपनीज ने डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट ऑन लॉस, हमने वो अपना शेयर उसमें लूज किया है, लेकिन इवेंचुअली उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस आ रहे हैं और हमने गवर्नमेंट एजेंसीज से जो अंडर WTO अम्ब्रेला काम कर रही है, नेशनल टेरर कमीशन वगैरह से भी टेकअप किया हुआ है, और चाइना भी अपने को करेक्टिव एक्शन लेगा तो प्राइसेस स्टेबल हो गई तो वी विल टेक दैट शेयर बैक। Next question, with Trump in power now and planning to further impose tariff on import from China, do you believe dumping will not continue going forward? Has industry applied for any anti-dumping duty on these imports? The industry has already applied for anti-dumping duties, and anti-dumping duties, after the thorough investigation, anti-dumping duties were imposed. But unfortunately, exporters and importers have started importing the same product for the same end use with some modification in the description or in the product. And to counter that tactics by the importers, we have already applied for anti-circumvention duties, and NTC is taking action, and investigations are in process, and hope we are expecting some favorable decision in favor of industry very soon. There is a hand raised by Sohail Taisaf, so we can take his question. Ji, Assalamualaikum. Rashid Saab, last year you mentioned that you did some trials with local coal. So any success from that experiment? जी, प्राइस सर लोकल कोल के ऊपर जो हमने ट्राई किया था उसके बारे में पूछ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि our experience of buying local coal is not really very good, not because of the quality of the coal, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है और उसकी प्राइस आपस में कंपेटेबल हैं, लेकिन जो लोकल मटेरियल का खरीदना और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज डाल देनी और पानी डाल देना, तो उसका जो सप्लाई चेन है वो कोई इतना अच्छा हमें नहीं लगा। उसमें अभी काफ़ी मसले हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कोई 10-15% लोकल कोल यूज कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। Aftab Sahab, you've also invested about 500 million in the second waste water treatment plant. Now, is this investment being a responsible corporate citizen, or does this help you in sales, in exports, or multinational companies? Well, I think first of all, it is our responsibility to clean our wastewater. It is a responsibility. It improves our image, and it will also improve our relationship with the multinational companies, because they are very particular about these things. Okay. Presently, we are running a wastewater treatment plant, but it is doing a partial. It has lesser capacity. And sir, finally, just one discrepancy. In your presentation, you mentioned that the paper and board capacity is about 274,000. In your annual report, you mentioned that it's more than 280,000. Just want to understand this discrepancy. And also in the box making, you say
that your capabilities have been elevated, but capacity आपके presentation और book में वही 35,000 है. So by elevation, do you mean that the efficiency is improved? I think the first question is, we have been running our machine number 2, making fluting on it, and when you make fluting for the box plant, you can produce more. But then when we started buying fluting from the market, we started making paper on it, and for this reason, this additional capacity which we were getting for PM2 was reduced. So that is, I think, the reason of this discrepancy, because in the report we might have taken it on fluting, and here we are telling, but what we are telling now is correct. Concentration. And box making capabilities that have been elevated? I think it is not being elevated, but we have more not in the terms of tons, but in terms of more flexibility to produce more qualities of paper, particularly the heavy boxes for home appliances. So we invested in that, but the total tonnage capacity remains the same. Okay, sir. Thank you so much. There is a question. What were the primary factor contributor to the decline in market size of paper and board? Was it due to poor sales by big FMCGs, due to boycott movement, etc.? There I are think- multiple factors. Ji, Aftab sir. Then you go ahead. There are multiple factors. First factor, overall economic slowdown, inflation, buying power of the consumers, and dip in the sales of FMGs, of the multinationals and national. Boycott has impacted sales of few categories, but at the same time, if somebody was not buying imported product or some multinational product, they were buying some other product. Practically, the economic slowdown and less buying power of the consumers are the major factors of drop in the overall consumption of paper and paperboard products for packaging purpose. Yes, sir. The next question by the same. Okay, has industry applied to National Talent Commission? You have already Yes, we have already applied to the National Talent Commission. And things are in progress. And another question by the same. Do you also get impacted by FATA exemptions? Not really, at the moment. Okay. Guideline 25 in terms of volumes. I think I've already commented that, okay, inshallah. First quarter results are already there. Another question, what is the current demand situation? Has it improved or declined? But it is stable and slightly improving. We are hoping that things are stable and in the next quarters will be an improvement. so there is a hand raised by Salim Samisa. Salim Samisa, please, you can ask your question. Unmute yourself and ask your question. Hello, can you hear me? Providence Capital. अस्सलाम वालेकुम। Yes. सर मुझे पूछना था, मैंने नोटिस किया था इम्पोर्टेड डेटा में कि जो इम्पोर्टर्स हैं उनके प्राइमरी मार्जिन्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे अगर उसको रॉ मटेरियल प्राइसेस से कंपेयर किया जाए, तो अराउंड लाइक 40% तक के उनके प्राइमरी मार्जिन आ रहे थे। प्राइमरी मार्जिन बेसिकली जो उनका प्रोडक्ट है उसमें से सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर हटा दी जाए तो वो मार्जिन जो था अराउंड 40% तक का आ रहा था। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि सेंचुरी का भी अभी जिस तरह ग्रोस मार्जिन थोड़े से इंप्रूव हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखा जाए, तो ये मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट फर्दर नजर आ रही है आपको फॉर द कमिंग क्वार्टर्स, और आपको वैसे ओवरऑल प्राइस आउटलुक भी पूछना था कि वो किस तरह का आपको लग रहा है कि प्राइसिंग मेंटेन हो सकती है या फिर इंप्रूवमेंट का कोई चांस है इसमें? Aftab sir. मेरे ख्याल में प्राइसेस इंप्रूव तो नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि जब इंटरनेशनल प्राइस में पल्प की प्राइस जब नीचे आती है तो हर चीज़ की प्राइस नीचे आ जाती है, लेकिन वो पहले आ जाती है, हमें इन्वेंट्री में जो पड़ी होती है चीज़ें वो वैसे ही होती हैं। तो मेरे ख्याल में अभी जो फ्यूचर में हमें नज़र आ रहा है कि प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आएंगी। जहाँ तक आपने उसका बात किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन की, तो 40% तो हमने कभी नहीं देखे, लेकिन ये है कि हमारे मार्जिन जो हैं वो पिछले साल से तो बेहतर होने चाहिए। ओके सर, थैंक यू।
Okay, so there is a hand raised by Mehroz Khan. So please unmute yourself and ask your question. Assalamu alaikum, Rashid Saab, Aftab Um, Saab. I hope I'm audible. yes, you are. सर एक तो ये चीज़ पूछनी थी कि जो CDP है आपका उसका 36% से 43% मार्केट शेयर इम्प्रूव हो गया गिवन इन द प्रेजेंटेशन ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। इसमें क्या मेजर रीज़न है कि आपका मार्केट शेयर इसमें इम्प्रूव हुआ है? तो सर अगर आप उस पर गाइड कर सकें। एक्चुअली हमारा मार्केट शेयर इम्प्रूव इस तरह हुआ है कि मार्केट छोटी हो गई और हम उतने ही रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो टोटल कंजम्पशन है वो कोई 2.25 लाख टन कम हुई और उसके ऊपर Okay. 92,000 टन इंपोर्ट भी बढ़ी। इसके बावजूद हमारी जो सेल थी उसमें सिर्फ 22,000 की कमी हुई। तो इस वजह से हमारी परसेंटेज तो बढ़ गई ना, क्योंकि मार्केट जितनी कम हुई हम उतने कम नहीं हुए। तो दिस Okay, इज द रीजन व्हाई वी सर जी थैंक यू सर, रियली अप्रिशिएट। सर आपने प्रेजेंटेशन में ये चीज़ शो की कि आप लोगों ने काफ़ी हेविली इन्वेस्टमेंट की है अपनी एनर्जी कैप्टिव्स के अंदर। सर मुझे सिर्फ एक आइडिया लेना था कि जैसे सीमेंट इंडस्ट्री भी है वो वेस्ट हीट रिकवरी जो है वो अपना इंस्टॉल करती है, ठीक है, जो एडिशनल एमिशंस होते हैं वो उसको भी रीयूज़ करती है। तो क्या आप लोग का भी जो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि स्टीम्स की यूजेज भी है उसके आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, तो क्या इसमें कोई अपग्रेडेशन या इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूजेज हो सकता है इसमें इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी? दैट इज़ माय वन ऑफ द क्वेश्चन। एंड सेकेंडली सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वी हैव क्राफ्ट पेपर, वी हैव पल्प एंड वी हैव ऑल्सो द वेस्ट पेपर, स्क्रैप पेपर। इसमें पहले जो एक वक्त में 2021 से पहले वेस्ट पेपर जो है वो इम्पोर्टेड और डोमेस्टिक जो यूज़ होता था बुल्ले शाह और बाकी जो कंपनीज भी यूज़ करती थी वो 50-50% होता था, और जो डोमेस्टिक स्क्रैप पेपर है उसकी प्राइसेस भी काफ़ी इम्पोर्टेड से कम होती थी। अब आज की तारीख में अगर मुझे सेंचुरी पेपर बोर्ड के यानी बिजनेस को फोकस करना है तो मुझे क्या अज्यूम करना चाहिए? पल्प को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करना चाहिए, क्राफ्ट पेपर को यूज़ करना चाहिए और वेस्ट पेपर को करना चाहिए? तो जस्ट ऑन अ ब्रॉडर गाइडलाइन सर, आई एम लुकिंग फ्रॉम योर साइड सर। अच्छा, पहला जो आपका सवाल था ना, तो पहली बात तो ये है कि हमें तो पहले दिन से ही बहुत सारी स्टीम भी चाहिए और बहुत सारी एनर्जी भी चाहिए। तो लिहाजा हमारे जो प्लांट हैं उनको हम कोजेन प्लांट कहते हैं। कोजेन मीन को जनरेशन। तो उसमें बिजली और स्टीम साइमल्टेनियसली पैदा होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारी गैस टर्बाइंस हैं वो 20 मेगावाट बिजली पैदा करती हैं, तो उसके साथ वो कोई 56 टन ऑफ स्टीम भी पैदा करती हैं। सो ऑल हीट इज रिकवर्ड। मेरे ख्याल में अवर जो गैस टर्बाइन वाला प्लांट है वो उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो 85% है। वी रिकवर ऑल द हीट फ्रॉम आवर गैस टर्बाइन। सिमिलरली जो कोल का भी हमने लगाया हुआ है वो भी ऐसे ही है कि हम स्टीम पैदा करते हैं, उसको स्टीम टर्बाइन में से पास करते हैं और स्टीम टर्बाइन का जो बैक प्रेशर है उसमें से हम लो प्रेशर स्टीम ले लेते हैं और उसको अपने प्लांट के ऊपर यूज कर लेते हैं। सो वी आर ऑलरेडी डूइंग द बेस्ट पॉसिबल practices of utilizing energy in the form of electrical energy as well as the thermal energy. जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसमें एक बात यह है कि डॉलर तो अपनी जगह खड़ा है, तो बाहर की जो इंटरनेशनल वेस्ट पेपर की कीमत है वो तकरीबन स्टेबल है, लेकिन जो लोकल हमारा इन्फ्लेशन है वो तो ऊपर बढ़ती जा रही है और ग्रेजुअली सिचुएशन ये होती जा रही है कि दिन ब दिन हमारा लोकल वेस्ट पेपर महंगा होता जा रहा है और इम्पोर्टेड सस्ता लगता है। तो हम जहाँ कहीं ज़रूरत होती है उसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, लेकिन ये भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है कि मैं तो इंपोर्ट करूँ और ज़्यादा शेयर अपने कंपेटिटर्स को दे दूँ लोकल का। सो इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो हम वक्तन वक्तन लेते रहते हैं। ये बात हुई। दूसरा आपने पूछा कि पल्प और क्राफ्ट पेपर और वेस्ट पेपर, तो हमारा जो ब्लेंड है टिपिकल ब्लेंड उसमें सबसे ज़्यादा तो वेस्ट पेपर यूज़ होता है और इट इज़ फॉलोड बाय द इंडिजिनस पल्प जो हम खुद बनाते हैं।
और सबसे कम जो चीज़ यूज़ होती है वो वुड पल्प यूज़ होती है जो हम इंपोर्ट करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम के लिहाज से, लेकिन प्राइस के लिहाज से मेरे ख्याल में वेस्ट पेपर और वुड पल्प तकरीबन बराबर ही होते हैं, लेकिन वेट वाइज उसकी रिक्वायरमेंट हमारी कोई 15% से ज़्यादा नहीं है। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। लास्टली वेस्ट पेपर के प्राइस अभी कर यस माय लास्ट क्वेश्चन, वेस्ट पेपर जो प्राइसेस होंगी आज की हिसाब से करंटली डोमेस्टिक वर्सेस इंपोर्टेड, वो क्या प्राइसेस होंगी सर ऑन अ पर केजी बेसिस, इफ यू जस्ट शेड सम लाइट ऑन दैट। देखो ना, वेस्ट पेपर जब हम कहते हैं ना तो वेस्ट पेपर की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो जो सबसे उसकी हल्की उसकी टाइप है वो कोई 45 रुपीज़ तक है, और जो थोड़ी सी जैसे OCC है वो कोई मेरे ख्याल में कुछ 60 के लगभग होगी, बल्कि 65 होगी। और इम्पोर्टेड की भी इसी तरह ही प्राइसेस फ्रॉम आइटम टू आइटम ऊपर नीचे होती रहती है। मिक्स्ड वेस्ट इज वेरी चीप, BBC इज मोर एक्सपेंसिव। BBC मीन्स बॉक्स बोर्ड कटिंग, ओल्ड कंटेनर कटिंग है वो और भी महंगी होती है। तो ये प्राइसेस भी स्टेबल नहीं होती, दे कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम मंथ टू मंथ एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कभी वो दुबई में सस्ती हो जाती हैं, कभी इंग्लैंड में सस्ती हो जाती हैं, कभी USA में सस्ती या महंगी हो जाती है। तो हम उसके ऊपर नजर रखते हैं, जहाँ अच्छा मिलता है ले लेते हैं। Thank you for the detailed response, sir, and I wish you good luck for the next year. Thank you so much. Thank you very much. Hand raised by Akil sir. Akil sir, you can mute yourself and ask the question. Assalamualaikum. सर आई हैव फ्यू क्वेश्चन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए अप्लाई किया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे करेक्ट कीजिएगा। मुझे तो ये मालूम हुआ था कि कुछ लोग मिस डिक्लेरेशन करके बोर्ड वगैरह स्क्रैप में लेकर आते हैं, जिसकी वजह से उनको एंटी डंपिंग ड्यूटी अप्लाई नहीं होती है। ऑलरेडी एंटी डंपिंग ड्यूटी अप्लाई हुई हुई है, तो वो मिस डिक्लेरेशन की वजह से ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, और जो डंपिंग हो रही है वो इसी वजह से चाइना से हो रही है। पहले तो ये मुझे आप थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा। सेकेंडली सर, वेस्ट पेपर की तो प्राइस जैसे आपने बता दी लोकली, इंपोर्टेड की BBC की भी प्राइस बता दें, और वुड पल्प की भी प्राइस अभी रिसेंटली क्या है और पहले क्या थी ये भी बता दें। अच्छा, एंटी डंपिंग ड्यूटीज के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी का अप्लाई किया था डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने 2016, फिर सनसेट रिव्यू अप्लाई किया था 2021 में, और एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज हो गई थी। और जो मिस डिक्लेरेशन जिसको आप कह रहे हैं वो स्क्रैप में करके लाने वाली चीज, वो तो एक हो कि ओकेजनल, और वो कस्टम हाउस वगैरह उसको टेकअप कर रहा होता है। हमारे केस में ये है कि वो उस प्रोडक्ट के डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करके, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी जिसके नाम से इम्पोज हुई है उसमें एक स्लाइट मॉडिफिकेशन करके उसके नाम में और प्रोडक्ट में सेम एंड यूज के लिए ला रहे हैं। उसके लिए भी अंडर NTC लॉ प्रोविजन है एंटी सर्कमवेंशन इन्वेस्टिगेशन की। तो वी हैव अप्लाइड फॉर एंटी सर्कमवेंशन इन्वेस्टिगेशन, और NTC हैज इनिशिएटेड दैट इन्वेस्टिगेशन, और उसमें वो ड्यू प्रोसेस है वो कंटिन्यूड है, और वी आर होपिंग फॉर सम बेटर आउटकम। सर सेकंड As मैंने regards BBC waste, की आफ्ताब प्राइस साहब ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, उसमें फर्दर जो क्लैरिटी अगर चाहिए तो। सर BBC की सर CIF प्राइसेस क्या है सर इंटरनेशनली, और वुड पल्प की भी क्या प्राइसेस है? अच्छा, ये प्योरली सप्लाई चेन। देखिए ये प्राइसेस स्टेबल नहीं होती, आई कैन गिव यू एन आइडिया। BBC की प्राइस समथिंग 160 प्लस माइनस $20 होंगी ओवर द ईयर। और यहाँ वीक चेंज होती रहती है, ये तो उसको कोई हार्ड एंड फास्ट, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट तो नहीं है ना, ये तो एक वेस्ट है कि जब कहीं इकट्ठी हो गई किसी के पास वो ज्यादा बिक गई। और जहां तक वुड पल्प है उसमें भी सॉफ्ट वुड है, हार्ड वुड है, BCTMP है, अनब्लीच पल्प है। दे आल्सो वेरी फ्रॉम $600 to $750। ओके, हेलो, ओके सर। So there's जी a hand raised by am I audible? जी यस, वेलकम। जी सर, मेरा एक सवाल है ये कि in recent quarters we have been seeing के lower gross margin as compared to last 2 years. So
when can we expect the margins to increase, and what were the primary reasons for the decline in the gross margin? अच्छा, डिक्लाइन इन जो मार्जिन था वो तो यही था कि जो मशीन हमारी सबसे ज़्यादा मार्जिन वाली थी वही हमारे लिए सबसे बड़े लॉस की वजह बन गई बिकॉज ऑफ डंपिंग। तो वो तो सिचुएशन अभी भी बहुत इम्प्रूव तो नहीं हुई, लेकिन वी आर होपिंग कि वो बेहतर होगी। लेकिन उस मशीन को अब हमने बाकी प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। प्राइसेस जो हैं वो अंडर प्रेशर तो हैं, और अब तो दो बातें हैं। एक तो ये है कि हम समझ रहे हैं कि जो हमारी मार्केट है वो बेहतर होगी। जब वो बेहतर होगी तो हमारे मार्जिन्स अगर इम्प्रूव ना भी हो तो वॉल्यूम तो इम्प्रूव हो जाएंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर में तो ये हुआ कि मार्जिन भी कम हुए और वॉल्यूम भी कम हुए। और फिर एक सबसे बड़ा इशू हमारा एनर्जी का भी था, उसमें हम थोड़े से हैंडीकैप थे जो कि अब नहीं है। कोला बहुत महंगा था जो कि सस्ता हो चुका है। हेलो सर, ये बता सकते हैं कि अभी आजकल कोयले की प्राइस मतलब क्या चल रही है, और कोयले का मिक्स क्या है, इंपोर्टेड है या लोकल है या अफगान कोयला है? देखिए, जो कोला है हमारा प्रीडोमिनेटली तो इम्पोर्टेड कोला है, और थोड़ा अबाउट 10-15% हम लोकल भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोकल यूज़ हो और उसकी सप्लाई चेन के जो इश्यूज हैं वो क्लियर हो। जहाँ तक अफ़गान कोले का ताल्लुक है वो भी हमने पिछले साल यूज़ किया है, लेकिन उसमें ऐसा हुआ है कि अफ़गान कोला बाहर से तो कोई से 5,000 टन आया है, लेकिन बिका कोई 10,000 टन है। वो एक और मसला पड़ा हुआ है। तो लिहाजा हमारे मुल्क में बिजनेस करने के लिए सिर्फ बिजनेस ही नहीं, इट इज़ नॉट ओनली कि आपको पेपर मेकिंग आनी चाहिए, कागज़ बनाना आना चाहिए। हमारे मुल्क के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। अब इसमें क्या कोई कर सकता है कि आप हर तरह की दो नंबरी के, यू आर सब्जेक्टेड टू ऑल काइंड ऑफ दो नंबरीज। कोले वाला भी दो नंबरी कर रहा है, वेस्ट पेपर वाला दो नंबरी कर रहा है। तो क्या कह सकते हैं। अब आपके पास कोयला आता है, उसमें वो पानी डाल के बेच देते हैं। तो लोकल के ये मसले हैं। तो जहाँ तक वैल्यू फॉर मनी का ताल्लुक है, यानी रुपीज वर्सेस MMBTU ऑफ द कोल, इंपोर्टेड इज स्टिल चीपर। Tell these gains as vice per distributor. Do you also get by PATA exemption? So we are not impacted by the PATA or PATA exemptions. Sir, do you have any further question? सर एक ही क्वेश्चन है, ड्यूटी स्ट्रक्चर सर आप दोनों बोर्ड्स के जो मेन बोर्ड हैं आपके सर डुप्लेक्स के हैं और दूसरे बोर्ड के ब्रिज बोर्ड के, अगर बता सके कि क्या है ड्यूटी स्ट्रक्चर इस वक्त? जी, इस वक्त जो कस्टम ड्यूटी है वो 20% है, और एडिशनल ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने अपने बजट में की हुई है 6% है, और करंटली दिसंबर तक उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी है 10%। तो प्रैक्टिकली कस्टम ड्यूटी इज 10% और 20%। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Any other questions? हेलो जी यासीन साहब। सर, ये बता सकते हैं जो आपका लोअर एंड सेगमेंट है उस पे क्या सूरत हाल है आजकल? वो भी काफी लो मार्जिन और लो डिमांड प्रोडक्ट है, तो वो भी क्या मतलब आगे फ्यूचर में मतलब है इसमें कुछ? लोअर एंड कंपटीशन की बात कर रहे हैं या यही बात? आप अपने सवाल को रिपीट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से सर ये ऑफसेट पेपर की बात कर रहे होंगे। अकील साहब, कैन यू क्वेश्चन रिपीट? सर मेरे ख्याल से ये ऑफसेट पेपर की बात कर रहे होंगे। नहीं, ऑफसेट पेपर में भी बहुत सारा पेपर इम्पोर्ट हुआ है। वैसे तो
ज़्यादातर पेपर जो बन रहा था, हम जो बना रहे थे वो फोटोकॉपी में और पब्लिशिंग में यूज़ होता था, और उसके ऊपर हमारे मार्जिन भी अंडर प्रेशर आए हुए हैं क्योंकि बाहर से वो भी सस्ता आ रहा है। लेकिन पेपर हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, इट इज़ ओनली 10% ऑफ आवर प्रोडक्शन। वो हमारे नेशनल मिक्स का 10% है सिर्फ। अभी आपने मेंशन किया था कि रेगुलेटरी ड्यूटी 10% जो है वो दिसंबर तक है, तो उससे आगे फिर क्या प्लान है? जी, ये तो आगे गवर्नमेंट का प्लान होगा, तो हम परसू करेंगे इसको। नहीं, यानी आपका फिर मार्जिन इफेक्ट हो जाएंगे इससे क्या? देखिए, नहीं, ऐसे था ऐसे था कि हमने उनसे जब ये इंटरवेंशन रिपोर्ट की बात की इसकी, तो उसमें टाइम लगना था, तो हुकूमत ने हमें 6 महीने के लिए ये रिलीफ दी। तो वो काम तो अभी भी पूरा नहीं हुआ, तो हम हुकूमत के पास जाएंगे कि आप इसको एक्सटेंड करें, क्योंकि हमें दूसरी तरफ से रिलीफ अभी भी नहीं मिली। वी विल ट्राई टू एक्सटेंड इट, लेकिन हुकूमत की बात का कुछ हम कमिट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ हमें और दूसरी तरफ ट्रेडर हैं। ट्रेडर को तो कोई भी हुकूमत अपने काबू में नहीं ला रही। नहीं, तो अगर ये 10% आपको इंटरवीनिंग पीरियड के लिए मिली है, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कितने परसेंट की है? नहीं, हमारी रिक्वेस्ट जो है ना, सिंपल एंटी डंपिंग 28% है ऑलरेडी, जो कि कलेक्ट नहीं हो रही। अगर वो 28% एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाती है तो वी डोंट नीड दिस 10%। और हमने तो गवर्नमेंट से उस वक्त कहा था कि ये एंटी डंपिंग को, तो लेकिन उसका ड्यू प्रोसेस है अंडर WTO लॉ, वो उनको NTC के रूल्स को फॉलो करना होता है, टाइमलाइन है। तो उन्होंने कहा इट विल टेक अराउंड 4 to 6 months। तो अगर वो 6 months में नहीं, क्योंकि बीच में कोर्ट्स के स्टे आ जाते हैं, तो वो प्रोसीडिंग प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो अगर वो एक्सटेंड हो रही होगी तो गवर्नमेंट विल डेफिनेटली कंसीडर आवर रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड दिस। और इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो में ये नहीं भी होती, तो जिस तरह CEO साहब ने एक्सप्लेन किया कि इन द मीनवाइल टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डंप प्रोडक्ट्स, हमने उन मशीन्स के ऊपर अल्टरनेट प्रोडक्ट डेवलप कर लिए जिनके ऊपर पॉजिटिव मार्जिन है, तो वी कैन इवन ऑपरेट इन दैट वर्स्ट सिचुएशन आल्सो इन अ बेटर वे। आपका मेन इशू इस वक्त जो है वो ये है कि उन्होंने नॉमेनक्लेचर चेंज कर लिया और वो डिफरेंट नेम से, ताकि वो उसमें फॉल ना करे। अगर वो उसको गवर्नमेंट करेक्ट कर दे तो आपका ये इशू रिजॉल्व। तो वो वी आर कंफर्टेबल, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और पाकिस्तान का आउटफ्लो भी फॉरेक्स का रुक जाएगा और वो लोकल इंडस्ट्री सब्सिट्यूट कर सकेगी। सर, ये UGDC में जो आपने बताया कि गैस सप्लाई आपको मिल रही है, तो उसका गैस रेट क्या आप लोग को होगा, जो आप लोग का है उनके साथ जो हमारा एग्रीमेंट है वो कोई $1 to $1.5 लेस देन SNGP प्राइस है। लेकिन उसमें ये है कि उसको लेना जरूरी है। वी कैन नॉट, इट इज यूज और पे। Thank you very much. I would like to extend the thanks to all the members who participated, and thank you very much to the management team. Thank you for the successful session. Thank you. Thank you.